आज हम बात करेंगे आलिया भट्ट के बारे में कि वो कैसे खुद कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करके इतने लाइमलाइट में रहती है एंड इतनी ट्रेंडिंग रहती है। एंड आज हम इसके भी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हर बार मिल जाता है, चाहे उसकी मूवी हिट हो या फ्लॉप हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, बॉलीवुड में सबसे बड़ा एंड प्रेस्टिजियस अवार्ड फंक्शन फिल्म फेयर अवार्ड होता है। एंड इस साल लगातार तीसरी बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है और ऐसा आज तक किसी भी एक्ट्रेस के साथ नहीं हुआ है कि वो 3 बार फिल्म फेयर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीते। अभी रिसेंटली 78th फिल्म फेयर अवार्ड्स हुआ था ऑन October 11, 2025, जिसमें आलिया भट्ट won the Filmfare Award for Best Actress in a Leading Role for her performance in Jigra. Again, Best Actress Award of Filmfare in 2024 won by Alia Bhatt for her movie Rocky और रानी की प्रेम कहानी. Again, Best Actress Award of Filmfare won by Alia Bhatt for her movie Gangubai Kathiawadi. In the same year, in the same movie, Alia Bhatt won Zee Cine Awards and IFA Awards for Best Actress. गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए अवार्ड मिलना was justified because that movie was super duper hit and too good and her acting was next level. She killed it. But this time उसको अवार्ड मिला for a flop movie. Won awards 3 times in a row. This has never happened with any other actor or actresses except the OG, the legend, Dilip Kumar. He is the only one who won 3 consecutive Filmfare Awards. In 1956 for Devdas, in 1957 for Naya Daur, in 1958 for Kohinoor. अवार्ड्स कभी भी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए मिलता है, लेकिन अगर आपको फ्लॉप मूवी के लिए अवार्ड मिल रहा है तो ऑफ कोर्स ये चीज़ एक्टर पे क्वेश्चन रेज करेगा। एंड जिस मूवी के लिए उसको अवार्ड मिला है, जिगरा, इज कंसिडर्ड अ फ्लॉप ड्यू टू इट्स डिसअपॉइंटिंग बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स एस्टिमेटेड बजट एंड द स्टार पावर ऑफ लीड आलिया भट्ट. Despite a Dashera release, the film had a very low opening and failed to show growth, leading to trade experts labeling it a flop. अगर हम बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो द फिल्म हैड अ लो ओपनिंग with its first day's collection being Alia Bhatt's lowest in a decade. The film reportedly had a large budget of around rupees 80 to 90 crore and फिल्म का टोटल कलेक्शन था अराउंड रुपीज़ 50 to 55 करोड़. जिगरा मूवी को लेके दिव्या खोसला एंड आलिया भट्ट करण जौहर के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुआ था. दिव्या खोसला अक्यूज द जिगरा मूवी ऑफ कॉपिंग हर मे रिलीज सावी. देन जिगरा के प्रोड्यूसर करण जौहर ने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक क्रिप्टिक मैसेज डाला था बिना किसी का नेम टारगेट किए हुए, जिसमें लिखा था साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच यू विल एवर गिव टू फूल्स. देन दिव्या खोसला ने भी बैक फायर किया था ऑन करण जौहर एंड आलिया भट्ट और उसने कहा था दैट दे इग्नोर्ड हर क्लेम्स एंड कॉलिंग आउट देयर शेमलेस बिहेवियर. कंट्रोवर्सी तो तब बढ़ गई जब दिव्या खोसला ने जिगरा के बॉक्स ऑफिस नंबर को फेक बताया. अपने इंस्टा स्टोरी पे उसने क्लेम किया कि दैट डे थिएटर्स वर एम्प्टी एंड आलिया भट्ट ने अपने टिकट्स खुद खरीदकर फॉल्स कलेक्शन अनाउंस कर दी. I just don't get it. How can you get an award for a flop movie and still feel happy about it? I mean, how are you even satisfied? Even your supporters are criticizing you, leaving aside the haters. तुम्हें तुम्हारे खुद के supporters criticize कर रहे हैं. Earlier, Filmfare used to hand out awards based on how well the movie performed, like hit or flop. Animal was a super duper blockbuster, and last year in 2024, Ranbir Kapoor got the Best Actor award. Even the Lapata Ladies cast was appreciated this year. Critics Award for Best Actor Female Pratibha Ranta, Lapata Ladies. Best Supporting Actor Female Chaya Kadam. Best Supporting Actor Male Ravi Kishan. Best Debut Actor Female Danshi Goyal, Lapata Ladies. Best Dialogue Sneha Desai. Best Music Album Ram Sampath. Best Lyrics Prashant Pandey. Best Playback Singer Male Arijit Singh. बेस्ट फिल्म लापता लेडीज. फिल्मफेयर का पहले क्राइटेरिया ये था अवार्ड देने का कि मूवी बहुत सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट थी, इसलिए अवार्ड मिला. बट नाउ सडनली द रूल्स बुक्स चेंज्ड. दे हैव चेंज देयर क्राइटेरिया. दे आर लाइक, या the movie didn't do well, but Alia Bhatt acted really well, and that's why she got the award. In fact, Yami Gautam's movie Article 370 was way better and more successful than Alia's Jigra. She gave an amazing performance, yet she didn't get any award. Even Kriti Sanon did a brilliant job in Teri Baaton Mein as Sifra, but still she didn't get any recognition either. And Alia is getting an award for a flop movie just because her acting was good. This clearly shows the bias and how she is basically the queen of nepotism in the industry. Real talent in Bollywood is not the movies, it's not the awards, it's connections. Here, talent barely matters. What matters is who you know, whose party you attend, whose mentor is backing you. On one side, you have performances that actually touch hearts, and on the other, performance polished by PR teams, pre-decided by the industry, set up for awards. One is real, one is display, and the awards? The display always wins. The craziest part is that when these chosen winners walk off stage with the trophy, the hate in the comments is so massive, they have to shut it down, or their PR team sit for hours deleting every negative comment just to protect the image. Win the award, but also win the daily hate. That's what it's like. This is what's killing the soul of Indian cinema. Not the lack of talent, but the lack of fairness. अभी अवार्ड जीतने के बाद आलिया भट्ट के पोस्ट पे यूजर्स ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं.
Karan Johar buying awards, check out blind item. How much did you pay for award? Because I almost destroyed my phone after spending my precious hours watching Bakwas Jigra. For Jigra, seriously, this really shows the authenticity of Filmfare Awards. It's just a award and you buying this. Movie snatcher, boyfriend snatcher, and now award snatcher. Have some shame. She doesn't deserve it. These awards are already decided in advance. This Nepo kid gets the Best Actress award every year because of Karan Johar and other influential people in Bollywood. Shame on you, Filmfare. Your standards have gone down. Kriti Senon gave better performances in her three 2024 movies than Jigra, yet she didn't win Best Actress. One word for you, overrated. पापा पापा मुझे भी वो काली ट्रॉफी चाहिए. हेटर्स तो छोड़ो, आलिया भट्ट के खुद के सपोर्टर्स उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी आप ये कमेंट्स देखिए। You are a good actress, but the obsession and insecurity turned into a disaster. For Gully Boy and Jigra, how could you get the awards? Highway, Urta Punjab, and for Razi, your performance was praiseworthy. You did a fantastic job. I don't know after getting this Filmfare award, how much love do you get by audience? Now it's look like you are overrated. I'm a big fan of Alia, genuinely, but handing an award to a super flop like Jigra, a film that wasn't just ignored in theatres but managed to be ghosted on OTT too, is basically Filmfare Awards saying we give trophies for attendance, not excellence. Congratulations, this is how you turn a legacy award show into a participation certificate. जिगरा जैसी मूवी के लिए अवार्ड मिलने के बाद आलिया भट्ट को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उसकी पीआर टीम्स को लेजिट नेगेटिव कमेंट्स डिलीट करने पड़ रहे हैं। अभी आपके कमेंट्स पढ़िए। Deleting the negative comments won't change opinion others have about you. My comment was deleted for speaking the truth. They are deleting negative comments. Lol. ऐसे फ्लॉप मूवीज़ देना, फेक अवार्ड्स जीतना, बॉलीवुड में कनेक्शन बनाना, दिस इज़ व्हाट्स किलिंग द सोल ऑफ इंडियन सिनेमा. Not the lack of talent, but the lack of fairness. Not outsiders failing, but insiders refusing to let them rise. And maybe, just maybe, the real winners are the ones who didn't get that award. Because they didn't have to lose their integrity to win it. तो आज के लिए इतना ही. If you like my video, then subscribe my channel and do like my video. Thanks for watching.